Audio Jungle. There, and welcome to the Excel VBA course. In this course, you will learn how to effectively use Microsoft's Visual Basic for Applications, or VBA, programming language to enhance and automate your Excel spreadsheets. My name is Gillian Warner, and I'll be teaching this VBA course. I graduated from the University of Central Florida in Orlando with a degree in aerospace engineering. Upon entering the workforce, I saw an immediate need in my company for automating some of our more repetitive, tedious tasks that we did in Excel. So with my engineering background, I went out and learned Microsoft's VBA to cut our 400+ hour process down to a 30-minute process. That's a 99.9% reduction in time and thus in cost savings. Now, I use my passion for engineering and for improvement processes to help teach others about VBA and how to use it effectively to get similar results in their own companies. As I mentioned before, using VBA can result in significant time and cost savings by automating your Excel work and processes. It can also significantly reduce human error found in your files, simplify long and complex Excel formulas, and it allows you to build your own custom formulas and processes to fit your specific needs. As you go through the course, I recommend you follow along in Excel. I'll give step-by-step instructions and note places where you can pause the video to copy down the code, and the best way to learn is by actually doing it. The nice thing about VBA is that it's very simple as far as programming languages go, so it generally doesn't take people too long to catch on. I recommend using VBA to automate or simplify tasks that you do regularly in Excel that you are already very familiar with to start off, even if they don't need to be automated or simplified. These are great practice cases since you know you already have all the information you need to be successful. I hope you're ready to jump in and start learning Visual Basic in Excel. If you have any questions as you go along, feel free to ask. सो वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल एंड आपको अगर एक एक्सेल वीबीए बनाने की कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब आपको लगती है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं. सो इस कोर्स के कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ इन दी लिस्ट में जो अवेलेबल है. ठीक है. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वीबीए का इसमें डेटा दिया गया है, तो इसमें लिस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है जहाँ पे करीब 93 MB के डेटास हैं, ज़्यादा नहीं है. उसके बाद आपसे मतलब सेकंड चैप्टर से आपको मतलब कंटेंट्स वगैरह मिलते जाएंगे, आपके डिटेल्स वगैरह बताए जाएंगे जिसके हिसाब से आप इस कोर्स को मतलब ले सकते हैं. सो VBA बेसिक्स स्टार्ट होता है और फाइल इंटीग्रेशंस एंड ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स, ग्रुप्स, स्टेटमेंट्स भी हैं. फॉर्म्स बनाने के लिए आपको बताया गया है जहाँ पे 7 चैप्टर पे दिखाया गया है, और स्पीड अप योर कोड इन VBA. ठीक है. डिबगिंग एंड टेस्टिंग पार्ट होता है, प्लस इसमें एडवांस कोर्स का भी ऑप्शन दिया है, मतलब एडवांस वगैरह टूल्स वगैरह यूज़ करने की आपको थोड़े से नॉलेज दिलाया जाएगा. और कंक्लूजन में आपको एक छोटा सा वीडियो दिया है, आप देख सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स. गुड नाइट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.